Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am here in the Red Sea. This is a most famous place because here is you can see 4 cities of the 4 countries and 4 borders. Number 1 is Taba. This is city of Egypt. You can see there. This area of land of Egypt, city and port Taba. After this, land of Palestine, city of Talib. This is land of Palestine, but you know now is under government of Yahud. And after this is Aqaba. This is land of Jordan, city of Aqaba. After this finished area, you can see there is Hakel. This is city of Saudi Arabia. There you can see 4 countries border, and this is a Red Sea. What one things I will show you, this place your السبت. This is a study of the Quran. You know why important Saturday for Yahud क्या है, जिसके बारे में सूरह अहराफ कुरान मजीद में इनका जिक्र है यहूदियों का, कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम हफ्ते वाले दिन शिकार ना करो, लेकिन इन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और ये अक्सर हफ्ते वाले दिन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इनका इम्तहान लिया करता था, तो मछलियाँ ऊपर आ जाया करती थी समंदर में और ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए इनसे वो रहा नहीं जाता था और ये हफ्ते वाले दिन शिकार किया करते थे। तो ये वो बस्ती है, अहल सब बोलते हैं, सब यानी हफ्ते का दिन। तो हफ्ते का दिन इसीलिए यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनका ये कॉन्सेप्ट है, उनका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जो है ये 6 दिन में बनाई और 7वें दिन अल्लाह ने आराम किया। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है जिसका अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहराफ में रद्द फरमाया, और उसका तर्जुमा है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि उस बस्ती के बारे में बताएं। इस तरह का मफहूम कुरान मजीद में मौजूद है इनके मुतालिक। तो ये वो तारीख़ी मकाम है, बस्ती है, जो अभी अंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यहूद है, लेकिन ये लैंड ऑफ फ़लस्तीन है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और यहाँ पर अगर आप आएँ तो 4 कंट्रियों के बॉर्डर यहाँ लगते हैं। सबसे पहले मिस्र का लगता है, और उसके बाद ये फ़लस्तीन का एरिया है जो अभी अंडर ऑफ यहूद है। उसके बाद ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एरिया जॉर्डन का है, अलकबा सिटी है, पूरा यहाँ तक ये इनका पोर्ट है। उसके बाद सऊदी अरब का हक्ल सिटी जो है, दर्रा और हुदूद दर्रा, वो शुरू हो जाता है, और ये यहाँ पर आके ये रेड सी ख़त्म होता है इस मकाम पे। ये लास्ट पॉइंट है रेड सी का।